Now we have architectural patterns, and in architectural patterns we have different patterns. We have MVC, which is model control viewer. We have layered architecture, we have repository, and we have client server and pipe filter. Now let's go through this one by one and try to just generalize this as um, like try to figure out कि कौन सी applications में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं. So model view के अंदर you have a model, a view and a controller. See, so I didn't do that perfectly. So there's the viewer. So model, viewer, controller. There we go. So what happens is that you have a user which will request something. So SQL की तुम्हारी एक वो होगी, request होगी, ठीक है. This will then go to the, so this controller will then go to the model, which is going to be the database, and it's going to retrieve the data. Then it goes to the viewer, which is now it's showing you what you want to see or what the client wants to see, which is the UI. So this is mostly used for web-based apps, right? And there are multiple ways to view and interact with data. This is modular, so if you're changing something over here, then it's very easy to change. So maintainability is very easy. The disadvantages is that it involves additional code and complexity, because again, you're dividing this into different modules. Dividing it is very difficult, right? Now, also some other key facts is that you want to keep the data separated from client, right? So data alag jagah pe and view alag ho raha hai. Agar data found नहीं होता तो एक error pop हो जाता है, and that's that. ठीक है? So again, you have three things. You have a controller, a viewer, and a model. So कंट्रोलर का काम क्या है? कंट्रोलर का काम है कि रिक्वेस्ट ले, ठीक है, मॉडल पे जाए, फिर मॉडल्स के बाद फिर यूआई के बाद जाए, ठीक है. अगेन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है. यू वांट टू यूज़ दिस कि जहाँ पे मॉड्यूल्स हो, ईजिली आप मॉड्यूल्स मेंटेन कर सकें, ठीक है. डिसएडवांटेज ये है कि कोड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है, एंड यहाँ पर डेटा अलग होता है क्लाइंट से. ना अगर इस पर चल ही रहे हैं तो हम फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट सर्वर के अंदर क्या है? क्लाइंट्स हैं, एंड देन यू हैव अ नेटवर्क लेयर, एंड देन यू हैव सर्वर्स. सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो होता है, दैट इज़ मोस्टली यूज फॉर ट्रांजैक्शंस, ठीक है. for transactions यूज़ होती हैं, ठीक है, for banking, information systems and these types of applications. Now again, इसके अंदर client server के अंदर वही मसला आ जाता है कि इनको separate करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंड यहाँ पे लोड पड़ सकता है बहुत ज़्यादा. सो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो डेटाबेस से वापसी आ रही है, इट माइट टेक सम टाइम. बट द एडवांटेजेस इज़ दैट यू हैव अ वेरी सिक्योर नेटवर्क, ठीक है, एंड द क्लाइंट कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस द सर्वर. सो अगेन यहाँ पे ये भी चीज़ है कि सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं है कि अगर एक सर्वर डाउन हो जाता है सो यू हैव मल्टीपल सर्वर्स बैकिंग इट अप. नेक्स्ट वी हैव द लेयर्ड आर्किटेक्चर. The layer architecture is similar to OSI, which is like एक चीज़ built to be top on the top of other. So if you have application layers, application layer for the sender's point of view, in computer networking तुम्हारे पास application layer, सारे data application layer से transport layer पे जाता है, and then transport layer से network layer पे जाता है. So the thing is कि ऐसी application जिसके अंदर you're not directly jumping from application layer to network layer, so you're not jumping from state 1 to state 3, you would use this. You were in situations where you would have systems built on something, right? You would use this layered architecture for systems where you want to make sure that आपका जो क्या कहते हैं इफ़ेक्ट है, जैसे कि आपने ट्रांसपोर्ट लेयर को अफेक्ट किया तो वो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे अफेक्ट हो जो उससे डिपेंडेंट था, एंड पूरी चेन पे अफेक्ट ना आए, राइट? तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हैं. एक और चीज़ ये है कि उस सिचुएशंस में भी अच्छा डिसएडवांटेज ये होता है कि एक ऐसा केस आता है कि सबसे आखिरी लेयर पे आपने चेंज किया तो फिर पूरी चीज़ चेंज होती है, राइट? क्योंकि सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट हैं. सो एक चीज़ ये, एंड देन अगेन सिंस यू आर यूजिंग अ लेयर्ड अप्रोच तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कोड, एंड इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स कि आप चीज़ों को अलग करो, ठीक है, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अवॉइड यूजिंग the other layers. So यहाँ पर है, and again this is not for performance critical applications, क्योंकि you can see कि अगर एक जगह अगर सबसे नीचे जगह कोई इफ़ेक्ट आया सो इट विल propagate in the entire chain, तो उसमें टाइम लग सकता है. एंड मॉडल रिप्लेसमेंट इज़ ईजी अगेन कि अगर आपको एप्लीकेशन लेयर पे कोई चीज़ चेंज करनी है तो एप्लीकेशन लेयर को निकालो, दूसरी एप्लीकेशन लेयर लगा दो.
So let me just read through. This also supports multi-platform applications. Yeah, this is also used for multi-layer security because you are making sure कि तीसरी layer first layer को access नहीं कर सकती, ठीक है? तो उसके लिए यूज़ होता है and developers can easily work on this. Then हमारे पास repositories होती हैं. Now the way how a repository works is data is shared between all subsystems. So the way how I like to um, imagine this is that you have this one repository in which you have different subsystems. So I can say this is like S1, S2, and S3. And even though these subsystems isn't aware of each other, they can interact with their repository, right? Gather the shared data. तो जैसे कोई shared data है वो S1 भी access कर सकता है, X2 भी कर सकता है, X3 भी कर सकता है. And there could be like अगर मैं एक data यहाँ पे change कर रहा हूँ और वो S2, S1, S3 यूज़ कर रहा है तो that propagates everywhere, right? So situations जहाँ पे एक चीज़ मैं trigger कर रहा हूँ वो हर जगह propagate हो रही है, that is where I would use a repository. But again you can see कि अगर यहाँ पे सिंस डेटा आपस में शेयर्ड हो रहा है तो फॉर एग्जांपल S2 कुछ फीचर दे रहा होगा, कुछ फीचर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, S1 को एक फीचर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, S3 को एक फीचर रिप्रेजेंट कर रहा होगा. सो S2 भी कुछ इनपुट दे रहा है, S1 भी कुछ इनपुट दे रहा है, S3 भी इनपुट दे रहा है. तो अगर S2 फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम बैठ जाता है क्योंकि या S2 अगर कोई गलत इनपुट डेटा दे देता है सो उससे पूरा सिस्टम गिर जाता है. सो सिंगल पॉइंट फेलियर है यहाँ पर. सो यू नीड टू मेक श्योर कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर सिंगल पॉइंट फेलियर्स ना हो, वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो. सो यू कैन सी दैट दीज आर इंडिपेंडेंट सब सिस्टम्स जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, देर यूजिंग शेयर्ड डेटा. So an example of this would be compilers क्योंकि what you do is you have one single global code and then semantics अपना काम कर रहा है, syntax अपना काम कर रहा है, and all of the other refactoring and all of वो अपने अलग अलग tools काम कर सकते हैं. So this is static and it doesn't changes on runtime, right? And again since repos यूज़ कर रहे हैं तो repos के अंदर you also have source control. so जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ data change किया तो फिर आप backups भी create कर सकते हैं. again you do one thing, it propagates the entire effect. Then we have the most easiest one, which is pipe filter architecture. This is something that you know. This is used for event processing, right? Event processing, ठीक है. सो जहाँ पर sequential कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, वहाँ पे you would use you would use this. And also for batch processing, the best example is convolution neural network. एक जगह से डेटा आ रहा है, वो फिर एक जगह से डेटा आ रहा है, फिर वो ये एक फ़िल्टर लगता है, फिर दूसरा फ़िल्टर लगता है. मतलब you want sequential data as in like एक फंक्शनैलिटी हो, एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट में जाए, सॉरी एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जाए, एंड ऐसा आर्किटेक्चर होगा तो उसमें पाइप फिल्टर यूज़ होता है. सो इट वुड रिक्वायर सम प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बिकॉज और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कि अगर ये बैठ गया तो पूरा ही बैठ गया सिस्टम. तो प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा ये कि यू वांट टू मेक श्योर कि डेटा सही से आ रहा है क्योंकि if you cannot have you to handle data which will not cater the general terms would be difficult. like general data को cater करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ऐसा हो कि भाई अगर डेटा क्लीन नहीं है तो पहले क्लीन करे फिर उसके बाद यहाँ जाए. सो दैट्स अ बिट डिफ़िकल्ट. यू वांट टू मेक श्योर कि आपके पास एक क्लीन डेटा आए और फिर आप एक साथ सारी फंक्शनैलिटीज़ एक साथ एक्सिक्यूट करो. So that's that, and yeah, that finishes it up. Now we will then revise.